सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। Okay, hello and good evening to all. Good evening, So sir. good evening. So we'll just do a quick recap, then we'll move forward. So last class we talked about the various components pertaining to supply chain analytics, how we can use and improvise the data to gain certain analytical insights, such as that could like further help in demand planning and forecasting at the same time. Certain areas wherein you require analytics, sometimes in the form of big data. The various forms of the analytical components which are being used in supply chain, whether we talked about the descriptive part, the predictive part, prescriptive part, or the diagnostic part of it. When we look upon the need, the overall, since the globalization has make a significant say landmark in the economic perspective, wherein most of the economies they are being integrated worldwide. So the need for data and analytics is like something which is the need, because if you look upon the macro perspective as well, the countries at the macro level, they have created certain supply chain wherein the use of data, it helps to further streamline all components of your supply chain. The problem driven supply chain wherein you require sometimes forecasting, you requires dependency on certain components, wherein the analytics part of it, it helps you to further solve these problems. When you look upon data driven supply chain, when see one of the most say wonderful thing is when the data is available, and with the help of the data, what you can do in your supply chain, you can plan, you can monitor, you can uh, say find out who are the best vendors in my supply chain. You can do almost most of the critical components with the say analytics if it's available when we are talking about the supply chain. Looking upon the evolution side of the supply chain, the functional side, the wherein the role of data and technology, it has its own parlance when we look upon the supply chain. The role of AI has also made a significant impact when we are talking about the systems, when we look upon these systems. Certain characteristics wherein your data integration, your predictive capabilities, your decision automation, all these forms an integral part of it. Talking about data sources and supply chain, so ERP is one form which helps, like most of the ERPs, they have the capabilities and they can fetch a large and vast amount of data for whether it is in terms of inventories, whether it is in terms of logistics. This helps to further streamline these components of the supply chain. How you create value chain out of it? So from data, you drive certain informations, you get certain insights, decisions, you make on those insights, and finally you gain certain value out of it, whatever decisions you make. So that's the overall value chain of data-driven, say, data-driven value chain. The big data, when we are talking about the vast say amount of data, we call it as big data, wherein say the data is like no
is in a kind of an abundance wherein your simple machines or your simple softwares or tools, they are unable to handle it, wherein you require certain systems, whether you require it software as a service or you require those bigger say machine handling tools wherein you can like have the components of those machines to cater upon the big data part of it. So five V's which we talked about starts from the volume, the velocity, the variety, the veracity, and the value. So volume talks about the large amount of data. The velocity talks about more towards what is the say the speed at which the data can be traveled. The variety talks about the say types of the data, and the veracity talks about the trust component of your data and the value which ultimately you can derive out of your data. Forecasting, whether it's your inventory optimization or your supplier monitoring or your logistics optimization, these are the core four areas wherein you require supply chain analytics to help you with these functions of the data. Talking about the big data architecture, wherein you start from the data collection, you do move towards data storage, you have your data lakes, you do certain processing out of it, and finally you land up to certain analytics and visualization components of it. Talking about the types of data, the prescriptive, predictive, we talked about these components and how these can help you in determining these components. Then the descriptive analytics part, what has happened, your reports, your dashboards that are used for your KPIs progression. Your predictive, which requires your say regression analysis, your time series analysis, your machine learning. Generally, it is used for forecasting. So prescriptive finds out know what should be done, the ideal problem of the data, what are the solutions which you can prescribe out of it. Comparing the different types of analytics, what has happened in the past is your descriptive, something which comes in your future is your predictive, which you forecast. Prescriptive is something, so some sort of a decision which you plan to make. The strategic benefit of it is your, of course, your competitive advantage, better customer satisfaction, and of course, when we talk about the improved agility. These are the certain financial benefits out of it, wherein you talk about cost reduction, increase the profitability, or the better resource utilization. These are certain challenges. I hope we have covered all these things, right? We are just doing a quick revision of it. We have covered, na? Please tell me, otherwise, I'm skipping it fast. We did this in the last class? Okay, fine. So I'll skip it accordingly. So these are the certain data challenges which talks about the pure data quality. These datas are available, but they are available in silos. And of course, those integration issues, they are pretty much part of it. The technical challenges, the technology always, at the same time, technology helps you to ease down certain things. It helps you to be like more robust, more agile. It helps you at the same time, no, wherein it is beneficial for your organization. At the same time, if not been implemented or not been done at a no perfect manner, it becomes say a boon or bane for the organization at the same time. So this is something which you have to, and also with technology you have to one thing no ensure whether you are implementing. आज के दिन में मैं छोटी सी technology लगा रहा हूँ. If I am implementing the smallest of the technology or I am going for the bigger scale technology, bigger size technologies. One thing which I have to ensure that what would be the scalability of my technology. Is my technology scalable or not? Uh, like suppose can I use my technology for say for small components only, or suppose today I have my business is small but suppose tomorrow my business grows up,
then what would be, say, the technological parlance to that? So this is something which you need to. I think it's is also something which you have to look into the supply chain component, ethical and security issues, which talks about your data privacy, your cyber security, and your AI concerns. The certain implementation challenges which gives you the picture of investment, whether you have the ROIs that's present in it. And sometimes there are a lot of strategic misalignment, so that is something which you have to take care of it. Talking about how we can address these challenges, we have the governance mechanism with us. You can always train your people, you can upskill them. Don't go for the one-sided implementation. Always go for the phased implementation and have the strategic alignment. So these are something which we have talked about so far when we are talking about supply chain analytics. So moving further, let's let's stop sharing this. Now let's move to the next component. I'll share it with you. So we have also done the analytics and demand planning. Now we'll let me just share the PPT with you. Give me 2 minutes. Just a second, I'm sharing. Just let me know once it's visible to you.
Some error is coming. Just give me a minute. Let me fix it. Once the PPT is visible, just let me know. Okay, I think it's visible. Okay, fine, perfect. So today, last class also we talked about certain components in terms of Unit 3, which talks about as an organization when you can go for outsourcing or when you can uh, do a or you take a decision or you do things in-house. So in-house or outsourcing or whether in terms of your inbound or outbound logistics, this is something which you need to very critically define and determine. हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम एक न्यूमेरिकल भी लिया था एंड वी सॉल्व दैट न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट हाउ वी take up certain decisions of whether going for the inbound or the outbound logistics, right? So with that, we'll take up these are the certain things which we are going to discuss is understanding towards sourcing and procurement analytics, analyze, make or buy decisions, evaluate the outsourcing versus in-house production. You need to understand the inbound logistics optimization, and you need to apply certain analytics in transportation planning. Also, you need to analyze supply chain contracts. So these are the learning objectives which I'll take you forward. So supply chain analytics, it helps you towards take a decision that is data driven and it is been related to your procurement logistics or whether you are we take up or talk about the supplier relation management. So if you have the data available to you, always you can take up better decisions. So that is how your supply chain analytics can help you. Modern procurement, when we are talking about how you procure and what is the role of analytics to help you in the modern procurement. So it helps you, number one, to predict your supplier performance. You can always uh, do the historical analysis of your suppliers in the past, and based on it, you can predict who could be the best supplier. Suppose मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे ए बी सी तीन सप्लायर्स हैं ए ने मतलब मुझे अगर 5 डेज इन टर्म्स ऑफ डेज की अगर मैं बात करूँ 5 डेज में आई वांटेड द रॉ मटेरियल और उन्होंने मुझे 3 डेज में दिया बी ने मुझे 2 डेज में दिया और सी ने मुझे 4 डेज में दिया तो मैं नेक्स्ट उसमें आई कुड रिलाई एंड डिपेंड मोर ऑन से बी अगर मुझे सपोज आई हैव टू आई डोंट हैव मच टाइम एंड आई हैव टू लाइक टेक अप अ क्विक डिसीजन एंड गो फॉर procurement. So then evaluate sourcing costs. So you can always do the cost analysis, and based on it, you can identify, what are the various costs that are available to me and how I can get the best of out of the cost that is available. Then managing procurement risk. So there's always a risk involved in procurement because you are taking up certain goods and commodities from a third party and you are procuring it. So there's always a risk factor. इसका हमने numerical calculation भी करा था risk if you remember in the last class. So there's always a risk that is involved and you have to always take up a decision. Yes, whether I should no go with risk, but
at the same time, analytics helps you to understand to what level I can take up the risk. It's not that I I like go blindly and I take a risk. No, one should not do that. That is how the data or the technology can help you with that. You can always have the uh, say understanding. No, it helps you to create that. ऑप्टिमाइजिंग योर वेंडर रिलेशनशिप. सो अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है सारे वेंडर्स का, पास्ट का, किसने मुझे कब कितना सामान दिया, किस रेट पे दिया, किस क्वालिटी में दिया, आई हैव ऑल दी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल टू मी, देन ऑलवेज आई कैन गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट ऑफ इट. जो वेंडर मान लीजिए मुझे कॉस्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वांटिटेटिवली वी फाइंड आउट हु इज द बेस्ट वेंडर, तो मैं वो सारी चीजें सारे एनालिसिस कर सकता हूँ एंड आई कैन फाइंड इट आउट हु इज माय बेस्ट वेंडर. So sourcing is finding and evaluating your suppliers, whereas procurement is talking about purchasing goods and services from the suppliers which we have selected. So first we source it among the suppliers. Who is my best supplier? Like the one example which I gave you, amongst A, B, and C, who is my best supplier? So uh, in the last example, we found out that yes, B is the right supplier for me. So now once I have selected my supplier from the list of supplier, now the second part of it starts when I go for procurement. Now, how to get goods and services from B? So that is the procurement part. So this is the very root definition of it. But sometimes what happens, people get confused between sourcing and procurement. They say that both are almost the same function and they have the same gravity. But let me tell you, it differentiates in terms of the meaning and differentiates in terms of the significance of each of them. So sourcing is only limited to finding and evaluating the best supplier. Who among the list is, suppose I have the 100 suppliers with me, but I cannot go with 100 suppliers. I need one or two suppliers, right? But if you have a list of 100 suppliers, then believe me, you can be good in terms of evaluation of the supplier and you can have the best of the supplier with you. But what if suppose this list is limited to like 5 supplier only, and out of these 5 supplier you select only 2 supplier? So what would be the percentage? If you look upon the percentage, there's like 50% almost chance that no one supplier would be selected out of those 5. So what is the probability that no one supplier would be selected? So when you are like taking, so more than like 25 to 30% chance is always available with one of the supplier to be selected in amongst the list. Then when we look upon, now we have done the selection, we have the supplier with us. Now I'll move to the second part and now I'll do the purchasing of goods and services from the from my selected supplier. Now, right, so now this is the one decision which I'll take. So the make or buy decision is one thing which you have to like, as an operations manager, as a supply chain analyst, or as an analytics partner, you'll always be in a confusion, no, whether I should make it in house or I should buy those things. So making a product in house, some is there are certain components which are been associated with it, its benefits also, and at the same time there are certain limitations. Now you need to understand. That's why we talked about, if you remember in operation strategy, we talked about certain components like no components pertaining to what is my strength, whether I can go for manufacturing or no, what is my strength uh, for it. So based on it, you need to say understand, and then only you can take up a decision. So whether I should go for manufacturing, भाई हर चीज, अगर मैं अपने यहाँ
जैसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप खाना घर पे बनाते हैं तो आपको पता है उसमें क्या सारी चीज़ें हैं, एंड यू प्रेफर कि हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ओवरऑल फैक्टर्स जितने भी उससे रिलेटेड हैं ऑल वुड बी गुड। बट इफ़ यू बाय इट एक्सटर्नली, या आपने स्विगी से खाना मंगाया है, तो देन यू हैव टू सेलेक्ट। आप किसी वेंडर से अगर खाना मंगाते हैं तो आप ऐसे यू टेक अप अ रैंडम डिसीजन, किसी भी वेंडर से खाना मंगा के खा लेते हैं, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं। नो, यू डोंट डू दैट। आप जाते हैं, आप एक अपना एनालिसिस करते हैं, हो सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, मेन नॉट भी, अगर मैं मान लीजिए नंबर्स पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं क्वांटिटेटिव भी करता हूँ, नंबर्स एनालाइज करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट जाते हैं और प्राइस देखते ही नहीं है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते ही नहीं है, प्राइसिंग का, प्राइस मैटर ही नहीं करता है ऐसा कोई? आई डोंट थिंक सो, राइट? तो ये सारे चीज़ें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने यहाँ ये प्रोडक्ट बनाना है या मुझे आउटसोर्स करना है। हो सकता है मैं सेमी आउटसोर्स करूँ, पूरा भी ना करूँ। अगेन, इट डिपेंड्स कि मेरे नीड क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, सॉर्ट मैं अपना करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ, एंड आई टेक अप अ डिसीजन। इन हाउस प्रोडक्शन की बात करूँ तो वहाँ उसके दे आर सर्टेन एडवांटेजेस वेयर इन क्वालिटी कंट्रोल इज इन योर हैंड। भाई मैं अगर खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, खुद ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग इट इन हाउस, तो ऑलवेज आई हैव दिस एज, क्वालिटी इज इन माई हैंड्स। आई कैन डिसाइड कि भाई मैं क्वालिटी किस लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैं क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मेरी हमेशा मेंटेन रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बिकॉज अगेन दीज थिंग्स आर in my hand only, right? When I talk about the disadvantages of it, so there are certain disadvantages that are been associated with it. Uh, that is, your fixed costs are always high. Your infrastructure and your investment costs are also high. These are certain costs which are always associated with it. Now, let me show you one video. Just give me a second. Let me show you one video that will help you out in understanding this. I'll just show you one video. Just give me a second. Let me share my screen with you. I hope this is visible. So this small video about the make buy decision in our supply chain. This is probably one of the most important core decisions that a company does throughout its lifetime. It's a question of what do we do ourselves and what do we pay others to do for us. And it comes down to a number of different factors that I'll try to go over in the next couple of minutes. Initially, there are two dimensions to look at. There's the process and there's the company. Whether the process is critical or non-critical means that how much of a risk are we taking by buying the service from an outside provider that can either be close by or far away? And how is the company at doing these things? Is it less capable or is it more capable? How good are we at it? In the essence, not that critical a process
and we're really not that good at it. Of course, we buy it. The other end of the scale, we're really good at it, and it's a critical process for our company's survival. Well, we do it ourselves. Think of it in the way that I'm not really good at cleaning. It's not really that critical for our business, so we hire a cleaning company to do it for us. In the same way, our production of the components that we sell, well, we're actually quite good at it, and it is critical for our company, so we make it ourselves, the make or the buy. Then things become a little bit muddy if we're looking at things we're not so good at, but it's critical for our business. This is where we have the high risk of opportunism. This is meaning that a potential supplier can hold us hostage, so to speak, because we need it. It's critical for our business. Most of the time, you would look to build competencies in that area in order to make it yourself. If it's a low risk, well, you buy it. But if it is high risk, well, you try to do it and build the skills. In the other side of things, we're quite capable of it, but it's not really that critical. If someone can cheat us, some suppliers can take advantage of us, well, then we make it ourselves. If they cannot really take advantage of, say, provide stationery or pens for our office setup, well, we buy it. All right. There's also another way of looking at this. This is looking at it from a core competence perspective. Core competence, as you might know, is a terminology from way back in the 70s, 80s about what is the critical skill in our company. And the idea is that we should try to focus our business on only doing what is our core competence. Core competence, therefore, is what we make or do ourselves. If it's in generic competence, we buy it or have someone else do it for it. Complementary competencies, something which is in between, something that we can do, but it's not really our best, is where we're looking at the transaction costs. How much is each transaction costing? We would often then optimize using, say, a standardized purchase agreements or similar processes. Whether it would then be, say, an IT. In some companies, you would actually consider that as a complementary competence to get our company running. And we look at, would it make more sense to have an internal IT department or have it outsourced to a supplier? So this is the small talk about the make buy decision. You need to consider, is it a core competence? Is there risk of opportunism? Is there a possibility of Right, so I'll share one more thing. This one is also very interesting. Just a second, let me share this.
सर वॉइस नहीं आ रहा। Okay, let me. This is very interesting. Please watch it carefully, then we'll talk about it. That we like to call the Ultimate Supply Chain Resume Guide, along with some details about our Supply Chain Mastery program that's enrolling now. So, what do you say? Let's dive right in. In order to truly understand procurement and purchasing, we need to break them down into their core definitions, the components, and the key differences. Now, many people use these terms interchangeably, but they actually serve distinct functions within supply chain management. First, let's start with what is procurement. Procurement is the strategic process of identifying, sourcing, negotiating, and acquiring the goods and services a company needs to operate effectively. It goes beyond just buying. It focuses on the bigger picture of supplier relationships, cost management, quality assurance, as well as risk mitigation. The key components of procurement. First is need identification. This is determining what goods, materials, or services are required. Next, we have supplier selection and sourcing. This involves finding and evaluating potential suppliers based on certain factors like price, quality, and reliability. Next, we have negotiating and contracting. This means discussing terms, conditions, and long term agreements with suppliers. Next, we have supplier relationship management, or SRM. This is all about building long term partnerships to ensure consistent quality and delivery. Risk management, assessing risk related to supplier reliability, geopolitical factors, and market fluctuations. Sustainability and compliance. This is about ensuring ethical sourcing, environmental responsibility, and meeting regulatory compliance. As an example, let's say a global automobile company doesn't just purchase steel and electronic components from a random supplier. The procurement team strategically selects suppliers based on cost, quality, and risk factors. They negotiate favorable terms and ensure that they have long-term agreements in place. Now let's go to the other side. What is purchasing? Purchasing is a subset of procurement that deals specifically with the transactional aspects of buying. It does include placing orders, managing invoices, and ensuring that payments are processed correctly. However, unlike procurement, purchasing is more about execution rather than the strategy. Some key components of purchasing. Purchase requisitions. These are internal requests to acquire a product or service. A purchase order, or a PO. This is an official document that is issued to a supplier detailing the products or services that are needed in the order. Order approval and processing. This is the authorization for the purchase to proceed. Invoice verification and payment. This is about ensuring that the supplier is paid correctly. Finally, we have order tracking and receipt. This is monitoring delivery and ensuring the correct goods arrive. As an example, if a hospital needs to buy medical gloves, the procurement team selects an approved supplier. They negotiate the bulk pricing and ensure compliance with any medical regulations. The purchasing team then places the order, tracks the shipment, and processes the supplier's invoices. Now let's talk about what is the difference between procurement and purchasing. Procurement, strategic. Purchasing, transactional. That's the best way to look at it. Procurement is strategic. Purchasing is transactional. Procurement involves planning, sourcing, managing supplier relationships, whereas purchasing is more of the administrative process of ordering and paying for goods and services. Procurement focuses on the why and how. Purchasing focuses on the what and when. Procurement looks at long-term supplier partnerships, risk management, and cost efficiency, while purchasing ensures that orders are fulfilled efficiently. Procurement manages value. Purchasing manages cost.
Procurement teams work to ensure the overall or the best overall value, balancing both cost as well as quality and sustainability. On the flip side, purchasing focuses on ensuring the lowest possible price for an immediate order. Procurement is ongoing. Purchasing is a one time activity. What do we mean by this? Well, procurement involves continuous evaluation and improvement, while purchasing is often, can be, or is a repeatable, standardized process based on single transactions. So, in short, procurement is the brain, and purchasing is the hands of this supply chain body. Procurement ensures that a company makes smart, strategic sourcing decisions, while purchasing handles the everyday tasks of placing and managing orders. Understanding this distinction is key for businesses looking to optimize their operations and for anyone looking into careers in supply chain management. And trust me, companies that get procurement right can save millions of dollars annually because they improve supplier relationships, which in turn reduces risks and can ensure more high quality sourcing. Okay, so up next, we're going to explore why procurement and purchasing matters for businesses and how some of the world's biggest brands use the strategies to gain a competitive edge. All right, so let's keep this rolling. Okay, so now that we've defined procurement and purchasing, let's talk about why they matter. For companies trying to stay competitive and profitable, and for professionals looking to build careers in supply chain, and even for consumers like you and me who expect quality products at the right prices, it's important to break this down. This is an ad for a free class on data science. And here's why I think this is something that you shouldn't miss. The data science market. Why procurement and purchasing matters for companies. A, cost savings and profitability. One of the biggest reasons procurement is essential for companies is cost control. On average, companies spend anywhere from 30 to 70% of their total revenue on procurement-related expenses, like raw materials, supplies, and services. According to a McKinsey & Company study, businesses that optimize procurement can reduce costs by up to 15% annually, which translates to millions of dollars in savings for large corporations. Let's look a little bit of a case study. How Walmart uses procurement for cost leadership. Walmart is famous for its everyday low prices strategy. A big part of how they achieve this is by negotiating long-term contracts with suppliers, consolidating purchases in bulk, and using data analytics to forecast demand more accurately. By streamlining procurement, Walmart reduces operational costs, allowing it to pass those savings on to the customers. This is why companies that fail to invest in procurement strategies often struggle with inefficiencies, higher costs, and supply chain disruptions. B, supply chain stability and risk management. Another reason procurement is critical is risk management. If a company relies too heavily on a single supplier or a specific country for production, they become vulnerable to supply chain disruptions. We've seen this play out recently, or rather recently, with the 2020 global pandemic and later on the 2021 global semiconductor shortages that forced automakers like Ford and GM to halt production, which cost billions in lost revenue. This is why procurement teams focus on supplier diversification, strategic sourcing, and contingency planning to minimize some of these risks. According to Gartner, 84% of procurement leaders say that risk management is now their top priority. Let's look at another quick case study. How Apple manages risk in procurement. Apple sources components for their iPhones from over 200 suppliers across 43 different countries. If one supplier has an issue, they have a backup source to keep production moving. This level of a strategic procurement helps them maintain product availability even during global disruptions. C, innovation and competitive advantage. Procurement isn't just about cutting costs. It's also about driving innovation. Companies that work closely with suppliers can co-develop new products,
improve quality, and even shorten product development cycles. A great procurement team scouts emerging technologies, sustainable materials, and cutting edge manufacturing processes to keep businesses ahead of the competition. Let's look at how Tesla uses procurement for innovation. Tesla doesn't just buy off the shelf components, they work directly with suppliers to co develop battery technology and other high performance parts. This approach helps Tesla maintain industry leading battery efficiency and electric vehicle range. It also allows them to secure exclusive access to high tech components that their competitors don't have. And whatever your opinion is on Tesla at the moment, this is just a case study on how their business operates. So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025. Right. So this is, let me take you back to the PPT. So this is the overall decision which we have talked about in terms of the cases, how Apple and all other organization they take up on this decision whether I have to go in-house or I have to like purchase a thing or I have to like move outside my production house and I go and I buy. So this is always because this is one of the biggest decision and a lot of strategic thinkers, a lot of strategic supply chain analysts and a lot of supply chain or rather operations manager, they have talked about these components and believe me, this is something which is, as an operations manager, this is something which you have to like tomorrow decide, and this will uphold a lot of cost and other things for you and for your organization. But this is one decision which you have to take, right? Now, you'll understand this PPT more better. So these are the advantages: quality control, confidentiality, flexibility when we are going in-house. Certain disadvantages that are being associated with it is high fixed costs. Your infrastructure investment is something which you have to make and is required. When you are going for outsourcing, the biggest advantage lower cost because आप compare कर लेते हो. You get the expertise. हो सकता है I am not the best person in one of the thing, but I may get somebody who is doing extraordinary or who is doing say the best job in terms of when we are looking for the outsourcing, and also the scalability. भाई मुझे आज मान लीजिए 100 यूनिट की जरूरत है, मैं 10 ही यूनिट बना सकता हूँ, तो 90 यूनिट्स में I can always go for the outsourcing and I can get those 90 units. But मुझे अगर खुद ही बनाना पड़ेगा तो I have to scale up my things and then get it working for me. Disadvantages: quality control आपके हाथ से छूट जाता है. You don't have the quality control. Dependency आपकी बढ़ जाती है क्योंकि now you are dependent on the supplier, and quality risk is one thing which you always have, right? कुछ फैक्टर्स जो कि मेरे डिसीजन को हमेशा इम्पैक्ट करेंगे. नंबर 1 इज द क्वालिटी एनालिसिस, सॉरी कॉस्ट एनालिसिस. कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है, योर डिसीजन ऑलवेज इज डिपेंडेंट ऑन दैट कि भाई कॉस्ट ही को तो मुझे सबसे पहला, अभी तक हम लोग ने इतनी सारी क्लासेस में एक बात करी एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, जब भी आपके डिसीजन लेते हैं तो पहला जो आपके दिमाग में आता है वो हमेशा कॉस्ट फैक्टर होता है. उसके बाद मैं किसी चीज़ पे बात करूंगा, बट पहली जो चीज़ मेरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज योर कॉस्ट. उस कॉस्ट में अवेलेबिलिटी क्या है. सेकंड पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है ऑफ कोर्स दैट इज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी आई कैन मेंटेन, वेदर माय क्वालिटी इज टू दैट एक्सटेंट और नॉट. जहाँ से मुझे से आउटसोर्स करना है वो उसकी क्वालिटी क्या है. कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी क्या है, अगर नहीं है तो मैं जिससे आउटसोर्स कर रहा हूँ उसकी कैपेसिटी क्या है. And of course, at the end, you always do the risk assessment.
अगर मैं, क्योंकि मैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं मेक और बाय डिसीजन को अगर एनालिटिकली देखूँ, इन हाउस अगर मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ तो उसकी एक फिक्स कॉस्ट होगी। उस फिक्स कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जुड़ेगी, और मैं जितनी क्वांटिटी बना रहा हूँ उससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा कि मेरा इन हाउस में कितना है। मान लीजिए मेरी फिक्स कॉस्ट 100 रुपये, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये है, और मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मेरे ओवरऑल कॉस्ट जो आएगी वो 100 × 20 × 10 आएगी। तो ये हो गई मेरी ओवरऑल कॉस्ट जो कि मुझे पे करनी है। अगर मैं सेम चीज़ आउटसोर्स कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? तब मेरी कॉस्ट होगी मेरी परचेस कॉस्ट और मेरी जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। मान लीजिए इसमें तो फिर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे वेंडर ने कहा भाई मैं 100 रुपये का आपको सामान दे रहा हूँ, तो मुझे 10 यूनिट लेनी है तो 1,000 रुपये पे करूंगा, 10 यूनिट ले लूंगा। उसने मान लीजिए, हाँ इसमें कंपोनेंट हो सकता है, सपोज आपका वेंडर जो है आपको कहता है कि अगर आप 10 के बजाय 20 यूनिट लेंगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, तो वहाँ मुझे इंस्टेड ऑफ 1000 का, अगर मुझे 10 यूनिट है तो 20 यूनिट 2000 की पड़ेगी, बट 2000 में 20% डिस्काउंट कर देगा तो मुझे 1800 की पड़ेगी। तो मतलब मेरी ओवरऑल कॉस्ट अब 90 रुपीज़ हो गई, तो ऑलमोस्ट 10% रिडक्शन हो गया मेरा पर यूनिट कॉस्ट में। तो ये मैं आउटसोर्सिंग का अगर मुझे कभी भी कॉस्ट निकालनी होती है तो मैं इस तरह का फॉर्मूला यूज करके इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग कॉस्ट निकाल सकता हूँ। ब्रेक इवन एनालिसिस हमेशा एक इम्पोर्टेंट वो है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल में डिस्कस भी करा था कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट स्पेंड एनालिटिक्स की बात करूं तो मैं देखता हूँ एक सप्लायर कितना स्पेंड करता है, कॉस्ट ट्रेंड क्या है, बजट के डिविएशंस क्या है। ये मेरे कोर कंपोनेंट्स है जब भी मैं एक स्पेंड एनालिटिक्स को एनालाइज करता हूँ। कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि सप्लायर सिलेक्शन एनालिटिक्स में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मेरा प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी फैक्टर्स क्या है, एंड ऑफ कोर्स द डिलीवरी टाइम एंड द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद इट। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन को। ना टॉकिंग अबाउट द केपीआईज, जो कि कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि मेरे डिसीजन को हमेशा इम्पैक्ट करते हैं, वेदर मैं जब भी आउटसोर्स कर रहा हूँ या इन हाउस जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि प्रोक्योर कर रहा हूँ कोई चीज़, तो इन फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज ऑन टाइम डिलीवरी। क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज मैं ले रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट मैं मान लीजिए या कोई भी चीज़ आउटसोर्स कर रहा हूँ या प्रोक्योर कर रहा हूँ, उसका टाइम फैक्टर क्या है, उसकी डिलीवरी क्या है। मान लीजिए कॉस्ट वाइज सब चीज़ सारे फैक्टर्स में बहुत फिनोमिनल है मेरा वेंडर या सप्लायर जो है, लेकिन वो टाइमली डिलीवरी ही नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज आई कैनॉट गो विद दैट पर्टिकुलर सप्लायर जो कि मुझे टाइमली डिलीवरी नहीं दे सकता है। डिफेक्ट रेट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए उसके 20% जो गुड्स हैं वो डिफेक्ट में ही चले जाते हैं। और सोचिए अगर मैं उस गुड्स को अपने ब्रांड में अगर सेल कर रहा हूँ और उसमें 20% डिफेक्ट आ रहा है, तो मेरा तो मार्केट पूरा वैल्यूएशन ही खराब हो गया। मेरा ना कोई डिमांड बची, ना कोई कस्टमर बेस बचा, एंड माय बिजनेस इज कम्प्लीटली लॉस। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी। लीड टाइम कितना अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे पास जो मुझे मेरा वेंडर है वो मुझे लास्ट डे में ही सारी चीज़ देता है, या 1 या 2 दिन का, या कुछ जो भी मैं लीड टाइम अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे मुझे लीड टाइम वो अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच आई always keep in mind while selecting it. लास्ट इज माय कंप्लायंस स्कोर। इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए व्हाट इज द ओवरऑल स्कोर, क्योंकि होता क्या है जब मैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल एक स्कोर कार्ड, एक स्कोरिंग की बात करता हूँ जहाँ पे मैं एक स्कोर्स देता हूँ। एंड वंस आई कंप्यूट दी ऑल दी स्कोर्स, जब मैं सारे फैक्टर्स पे, मान लीजिए मेरे पास 10 सप्लायर्स हैं और मैं ये सारे पैरामीटर्स लेता हूँ और मैं टाइम पे उसको स्कोर देता हूँ आउट ऑफ 10, मैं डिफेक्ट्स पे आउट ऑफ 10 स्कोर देता हूँ, मैं लीड टाइम पे आउट ऑफ 10 स्कोर देता हूँ, और मैं कंप्लायंस पे आउट ऑफ 10 का स्कोर देता हूँ। तो मैं ओवरऑल जो मेरा कंपोजिट स्कोर निकलेगा सारे फैक्टर्स को देखते हुए, उसके बाद मैं उस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि कौन सा मेरा, जहाँ पे इफ़ यू रिमेम्बर हमने एक वेटेज एवरेज की भी एक्सरसाइज करी थी सप्लाई चेन एनालिटिक्स में न्यूमेरिकली, जहाँ पे हमने वेट्स असाइन कर दिए थे। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है मेरा ऑन टाइम डिलीवरी को मैं सिर्फ 5% वेटेज देता हूँ, पर मैं डिफेक्ट रेट को हो सकता है 20% का वेटेज दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो कंप्यूटेशन है उसमें आई हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स एंड देन ओनली आई कैन कंप्यूट कि हाँ भाई 5% इसका वेटेज है तो हो सकता है।
एक सप्लायर जो कि मुझे सपोज करिए ऑन टाइम में 5 दिन पहले भी चीज़ें दे रहा है, रादर देन एक सप्लायर मुझे जो कि 1 दिन पहले दे रहा है, पर उसको मैं हो सकता है उससे प्रोक्योर ना करूं, मैं उस सप्लायर से प्रोक्योर कर लूं जो कि मुझे 1 दिन पहले दे रहा है, क्योंकि हो सकता है डिफेक्ट रेट में मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज है वहाँ पे, उसके उसके जो रिजल्ट्स हैं और जो उसके स्कोर्स हैं वो बहुत हाई है, तो ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर जो है उसका वो बढ़ गया, तो उसके बेसिस पे आई डू ऑल दी डिसीजन। Now talking about the inbound logistics, यहाँ पे मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल्स के जो कि मूव करते हैं सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउस की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये वो सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि मैं प्रोक्योर करता हूँ अपने सप्लायर से, और मैं इसको अपने मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउस में लेके आता हूँ, एंड देन आई मूव टूवर्ड्स अनदर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर क्योंकि मैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और मैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स को जब मैं कंबाइन करता हूँ, तो यहाँ पे जब मेरे पास डेटा पे बात हो रही है, तो मेरे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में जब मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में देख सकता हूँ, उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, मैं रूट एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता हूँ, और अगर मान लीजिए लीड और लैग में जब सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता हूँ, कंप्यूट कर लेता हूँ, देन आई कैन फाइंड इट आउट व्हाट वुड इज मतलब मेरी सबसे बेस्ट रूट्स क्या है, एंड विच इज द बेस्ट रूट विच आई कैन यूज। तो हो सकता है मेरा अगर ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं मेरा, मैं हो सकता है आई वाज प्रेफरिंग रोड, और मैं रोड को हो सकता है चेंज कर दूँ रेलवे से, रेल को भी हो सकता है चेंज कर दूँ एयर से, एयर को चेंज कर दूँ सी से, और सी को भी हो सकता है माइट भी मैं पाइपलाइन से चेंज कर दूँ। तो मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे हमने एक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, इफ आई रिमेम्बर, सप्लाई चेन एनालिटिक्स में हमने एक वीडियो देखा था अबाउट अमेजोन। अमेजोन ने अपने लॉजिस्टिक्स को क्या चेंज करा, उसने जितने भी उसके रोड और रेल के रूट्स थे उसने उसको पूरा चेंज कर दिया एयर और सी से। उसकी वजह से क्या हुआ, उसने पूरे जितने भी उसके से शिपमेंट्स थे जो सी से इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, और उसने एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी बढ़ा दिया अपने शिपमेंट्स का, लॉजिस्टिक्स का, एंड एट द सेम टाइम उसने उसकी वेलोसिटी भी बढ़ा दी, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट इन कोर technical terms, velocity and the say overall volume. So this is how your supply chain analytics can help you that. अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एनालिटिक्स देखूं, तो मेरी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, व्हाट इज माय रेट एंड द ओवरऑल वेट विच इज बीन कैरीड आउट। तो मैं यहाँ पे सपोज करिए मेरा डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, मेरा जो उसका ओवरऑल रेट आ रहा है दैट इज अराउंड 500 पर यूनिट, और मेरा ओवरऑल वेट जो है दैट इज अराउंड से 1 kg। तो मैं इसको जब सब चीज़ को मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट द पैरामीटर्स फॉर माई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एनालिटिक्स। Now talking about one of the another important component, that is your route optimization analytics. So route optimization analytics में how it helps you, it helps you to find out what would be the shortest route for me, and the lowest cost delivery route। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है मेरे लिए भाई, मैं कोई भी सपोज करिए वट एवर से कंपोनेंट आई एम प्रोक्योरिंग, तो उसके लिए जो मेरी सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, व्हाट वुड बी माय शॉर्टेस्ट रूट, एंड कॉस्ट मैं देखूंगा। तो भाई इसके लिए आप ऑपरेशंस में, इफ़ यू रिमेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर पर्ट एंड सीपीएम। वन इज़ योर प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, सेकंड इज़ योर क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पे उन दोनों कंपोनेंट्स का कोर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशनल कंपोनेंट्स का यहाँ पे बहुत यूज़ आता है, एंड उसको उसकी हेल्प करके आप डेटा अगर आपके पास है तो उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट दीज कंपोनेंट्स। देन योर व्हीकल यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे आप एक्चुअल लोड देख सकते हैं, एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी विच यू कैन हैंडल। लीड टाइम एनालिसिस की बात करूँ, तो लीड टाइम आप देखते हो अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग में ऐड करते हैं ट्रांजिट की कॉस्ट एंड द रिसीविंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि भाई मेरा लीड टाइम कितना है, एंड हाउ कैन आई कैन यूज इट। सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एंड इट इज लाइक मोस्टली बीन यूज, विच टॉक्स अबाउट एंड डिफाइंस my suppliers or obligation towards me and my organization, the pricing model, the delivery terms and the penalties।
दैट इज बीन इन्वॉल्व। तो मेरा जो भी सप्लाई चेन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि भाई मेरे सप्लायर के ऑब्लिगेशंस क्या है, मेरी प्राइसिंग क्या है, जो मैंने प्राइसिंग रखी है उसको आप शुरू में नेगोशिएट कर सकते हैं, बट एट द एंड यू कैन नॉट डू इट बिकॉज नाउ यू आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देन डिलीवरी के टर्म्स क्या है, हो सकता है मान लीजिए मैंने कोई सामान मंगाया है बहुत सारे बल्क में, मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं एंड डिलीवरी मुझे चाहिए, सपोज आई एम स्टेइंग एट नोएडा, मुझे नोएडा में डिलीवरी चाहिए, बट जो मेरी बात हुई थी एट द टाइम ऑफ सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ कि वो न्यू दिल्ली में डिलीवर होगा, वहाँ से वेयर हाउस एक्स पे डिलीवर कर देंगे एंड फ्रॉम देयर आई हैव टू लाइक ब्रिंग इट टू माई वाई वेयर हाउस। तो एक्स से वाई की जो कॉस्ट है उसमें वो सप्लायर नहीं बियर करेगा एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर मान लीजिए सपोज करिए वो एक्स तक भी नहीं लाता है तो व्हाट वुड बी द पेनल्टीज दैट वुड बी इन्वॉल्व इन इट। तो ये सारी चीज़ें भी कंपोनेंट्स मुझे ध्यान में रखने होते हैं। तो जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किस किस चीज़ पे, फिक्स प्राइस पे, कॉस्ट रीइंबर्समेंट पे, रेवेन्यू शेयरिंग पे और बायबैक्स की। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स है तो उस पे यू ब्रिंग इन दी टाइप्स ऑफ योर सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सप्लायर और बायर के शेयर रेवेन्यू, जो कि हो सकता है नॉट नेसेसरी कि अलोन आप चीज़ें कर रहे हो, यू समटाइम्स गो फॉर अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कि भाई मेरा अगर आप इस सपोज करिए 50% कंपोनेंट या पार्ट में आप इन्वॉल्व हैं एंड वी आर लाइक हैविंग अ काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर इनटू इट, तो जो भी प्रॉफिट्स आएंगे हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, तो यहाँ पे मैं जो रेवेन्यूज होंगे उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ ना। बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सप्लायर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए मैं अपने यहाँ भाई इन्वेंट्री की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो रिटेल में तो बिल्कुल कोई नहीं रखना चाहता है आज के दिन अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को, और अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को रखने का एक बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। इसलिए जनरली आप देखिए तो मार्केटिंग वालों ने क्या करा, इसमें हेल्प कैसे करी कि उन्होंने एक चीज़ निकाल दिया इसमें कि आप कुछ डिस्काउंट दीजिए, कुछ ये सारी चीज़ें करिए एंड बेस्ड ऑन इट आप इसमें जितना भी आपका ये सारी चीज़ें हैं क्या बोलते हैं डिस्काउंट देके, और इसको आप अपने हाथ से शेल्फ में स्पेस जनरेट करिए एंड यू कैन हैव दी you can send that back those unsold inventories to the suppliers. So this is how your buyback contracts plays an important role. Now talking about the contract performance analytics, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को, और मैं देखता हूँ डिलीवरी परफॉर्मेंस को, और मैं देखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचेस क्या है। तो मेरे जो भी कंप्लाइंसेस है मैं उसको मॉनिटर करना मेरे लिए ज़रूरी है। परफॉर्मेंस क्या है भाई डिलीवरी में वो मुझे देखना है एंड ऑफ कोर्स दी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट रिस्क एनालिटिक्स। अगर मैं देखूं कॉन्ट्रैक्ट्स में तो सप्लायर अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके क्या क्वांटिटेटिव आप एनालिसिस कर सकते हैं एंड बिलीव मी ये सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं। यस प्लीज। The slides are not moving. आई गेस इट्स मूविंग। नो Sir, in-house नहीं, हम लोग पास production. मूव नहीं हुए। Sir, in-house नहीं production वाली है बस, उसके बाद नहीं आगे जा रही है। अभी हो रहा है सर। अब मूव हो रहा है। सर, अभी तो इन हाउस पे फिर आ गया है सर। हाँ, Yes, sir, अब हो हो रहा रहा है। है। अच्छा तो ओके फाइन। तो ये सारी चीजें जिस पे हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, सो यू कैन सी दिस इन दी स्लाइड्स। यहाँ पे मैं मेक और आई जस्ट क्विकली रिपीट इट। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट था जहाँ मैं मेक और बाय का एनालिटिकल, क्योंकि सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेक और बाय का एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखा और मैंने एक डिसीजन लिया इन कंपोनेंट्स को लेके, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को और क्वांटिटी को लेके कि मुझे इन हाउस प्रोडक्शन करना है या मुझे आउटसोर्स करना है। अगर आउटसोर्स करना है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए मैं परचेस कॉस्ट को सीधा सीधा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मेरा एनालिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। इस पे हम लोग आगे एग्जांपल्स भी करेंगे, राइट। देन ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैं
प्रोक्योरमेंट की स्पेंड एनालिटिक्स देखता हूँ, तो जहाँ मैं सप्लायर्स के स्पेंड्स देखता हूँ, मैं कॉस्ट के ट्रेंड्स देखता हूँ और मैं बजट के डिविएशंस देखता हूँ। ये कुछ सप्लायर सिलेक्शन एनालिटिक्स के क्राइटेरिया है, जहाँ पे मैं प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, टाइम और रिस्क, ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं दिमाग में रखता हूँ, और उसके बाद आई कैन मेक अ डिसीजन कि मैं सप्लायर कौन सा सिलेक्ट करता हूँ। सप्लायर परफॉर्मेंस का जब मैं डैशबोर्ड बनाता हूँ, तो डैशबोर्ड आप एनालिटिक्स में बनाते हैं, हम बनाएंगे भी एक्सेल में बहुत सारे डैशबोर्ड। तो उसमें मैं ये सारे कंपोनेंट्स देखता हूँ कि भाई ऑन टाइम डिलीवरी क्या है, डिफेक्ट रेट क्या है, लीड टाइम क्या है और कंप्लायंस स्कोर क्या है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की मैंने अभी बात करी थी, तो वहां पे मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि भाई मेरे जो भी रॉ मटेरियल है उसके मूवमेंट क्या है सप्लायर से मेरे मैन्युफैक्चरिंग या वेयर हाउस में। अब मैं इसी में को जब एनालिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ एनालिटिक्स मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मेरी एनालिटिक्स क्या हेल्प कर सकता है। तो अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो मैं उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकता हूँ। आई कैन प्लान माई रूट इफेक्टिवली। और अगर कोई डिलेज है, क्योंकि लीड और लैग के बहुत डिलेज होते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, तो मैं वो सारी चीज़ें प्लान कर सकता हूँ। इवन यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन है, रोड, रेल, एयर, सी, पाइपलाइन, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी मैं अगर एनालाइज करूँ और इसका भी अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो मैं अच्छे से प्लान आउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अमेजोन का एक वीडियो दिखाया था आपको, उसमें अमेजोन ने क्या करा, रेड और रोड और रेल को उसने चेंज कर दिया एयर और सी से। जितने उसके बड़े लॉजिस्टिक्स कंटेनर्स थे वो सारे उसने सी पे कर दिए, और जो बाकी उसके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल पे नहीं उसको ज़रूरी थी मैनेज करना, तो वो उन सारी चीज़ों को एयर में ले आया। इसका एक अलग एनालिटिक्स का फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। तो हम डिस्टेंस, रेट और वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको मान लीजिए ये तीनों कंपोनेंट पता है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एनालिटिक्स। रूट ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर किसी को आज के दिन, भाई लीड और लैग की बात है, मुझे अगर 5 दिन में कोई सामान चाहिए, अगर मुझे 3 दिन में मैं कर सकता हूँ, तो आई एम दी बेस्ट ऑपरेशंस मैनेजर। हर कंपनी को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं 5 दिन के काम को 4 दिन में करता हूँ या 4.5 दिन में करता हूँ, नो बडी वॉन्ट्स मी एज एन ऑपरेशंस मैनेजर। तो वहां पे मेरा ऑप्टिमाइजेशन हो चाहे मेरी डिजाइनिंग हो, मुझे किस हिसाब से सारी चीजें डिजाइन करना है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितनी जल्दी किस रूट से और कॉस्ट को कम करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए टाइमली डिलीवरी कर सकता हूँ। इफ आई कैन डू दैट, आई एम द बेस्ट ऑपरेशंस मैनेजर। इफ आई कैन नॉट, देन नोबडी नीड्स मी, राइट। ना व्हीकल यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी व्हीकल यूज हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं आप कितनी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी। अगर ये दो पैरामीटर्स है, तो यू कैन फाइंड आउट द व्हीकल यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स। लीड टाइम अगर आपको एनालाइज करना है, तो लीड टाइम एनालाइज करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, जहाँ पे आप ऑर्डर प्रोसेसिंग ले सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं ट्रांजिट, उसमें ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर आपके पास पहुंचा है, रिसीविंग। तो ये जब सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे, तो यू विल फाइंड द लीड टाइम एनालिसिस। यहाँ पे मैंने बात करी थी सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स बात करते हैं सप्लायर ऑब्लिगेशंस की, प्राइसिंग की, डिलीवरी टर्म्स की और पेनल्टीज की। भाई जो भी मेरे ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसकी लीगल बाइंडिंग है, एंड दीज आर समथिंग विच इज once it's been freeze, then you have the legal obligation to follow it. कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फिक्स प्राइस क्या होगी, मेरी कॉस्ट रीइंबर्समेंट क्या है, मेरा रेवेन्यू शेयरिंग क्या है, एंड बायबैक क्या है। बायबैक स्पेसिफिकली रिटेल, अगर आप ऑपरेशंस की बात करो या रिटेल सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात करो, तो रिटेल सप्लाई चेन में बायबैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप यूनिट्स या कमोडिटीज को यू कैन नॉट होल्ड इट, you have to, like, no, at some certain point of time you have to send it back, अदरवाइज आपका एक इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा, नोबडी वांट्स टू हैव द इन्वेंट्री कॉस्ट। रेवेन्यू शेयरिंग पे भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। बायबैक कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मैंने अभी आपको बताया, भी टॉक अबाउट दी अनसोल्ड इन्वेंट्री को सप्लायर वापस ले लेता है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आप परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में ध्यान रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। एक तो हो गया स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या है आपके, डिलीवरी परफॉर्मेंस क्या है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो उसके लीगल वो क्या है आपके पास, से ऑब्लिगेशंस जो कि आपके पास अवेलेबल है।
रिस्क की बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो सप्लायर अगर डिफॉल्ट करता है उसके क्या रिस्क है, डिलीवरी डिलेज के क्या रिस्क है, और प्राइस वॉलेटिलिटी के क्या रिस्क है। एंड बिलीव मी, ये सारे रिस्क जितनी मैंने तीनों चीज़ की बात करी, एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ये सारी चीज़ें आप सप्लाई चेन में जब आप देखोगे, उसके एनालिटिक्स की बात करोगे, तो ये नंबर्स में भी दिखेंगे, एंड दीज आर वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स विच यू विल फाइंड इन सप्लाई चेन, राइट। एप्पल का जैसे एक एग्जांपल लिया था हमने कि वो फॉक्सकॉन से आउटसोर्स करता है एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी के लिए, इसको भी हम लोग ने लास्ट उसमें डिस्कस किया था। अमेजोन का लॉजिस्टिक्स जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, हाउ इट यूजेस एनालिटिक्स फॉर वेयर हाउसिंग एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बेसिस पे अमेजोन ने सारे आपके ओवरऑल रूट्स में अपने बेस्ट ऑप्टिमाइज करके एंड लॉजिस्टिक्स उसने सारे अवेलेबल कराए। एआई जो है, अब इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूँ यहाँ पे, तो एआई जो है वो आज के दिन प्रोक्योरमेंट में मोस्ट ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन दे यूज एआई। यू हैव योर ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू हैव योर प्रेडिक्टिव लॉजिस्टिक्स। आज के दिन एआई सारी चीज़ें ऑटोमेट करता जा रहा है, स्पेसिफिकली योर प्रोक्योरमेंट। ब्लॉकचेन यूज होता है in terms of your contracts, और predictive logistics is something which is available to you। अब यहाँ पे मैं अगर सप्लाई चेन एनालिटिक्स में सारे परव्यू में देखूँ, तो मेरे पास सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं डेटा का। नंबर वन, अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन इट बिकम्स अ मेजर चैलेंज फॉर यू, एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड हाउ यू कैन maintain the data quality for your say overall say supply chain. Then integration issues and your supplier resistance. So this is something I think we talked about. This is something about your supply chain analytics in sourcing and planning. So that brings me to the end of this unit 3. कोई question है आपके पास इसमें, you can always ask me. I hope you guys were able to understand and comprehend whatever I told you. मैंने हर तरीके से आपको समझाया। कुछ उसके इंटरेस्टिंग कंपोनेंट जहाँ बेसिक क्राइटेरिया पे आई शोड यू सर्टेन वीडियोस आल्सो। आई टॉक्ड अबाउट सर्टेन कंपोनेंट्स एट द कोर, एंड आल्सो आई टुक इट टू सर्टेन इंडस्ट्रियल एग्जांपल सो दैट यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है वेदर यू गो फॉर अ मेक और यू go for a buy. Specifically, your unit 3 talks about this component. So I hope it's clear to you. Yes, sir. Okay, great. So we'll if you have any questions, we can take that up. Otherwise, we'll end this unit 3. And coming Sunday, we'll start with unit 4. So uska first we'll do the numerical exercise, and then we'll make it forward with the presentation of it. Okay, so no more questions. Fine, then we can end this class, right? And on Sunday, we'll start with the unit 4. So thank you so much, guys. Thank you, sir. And if no more questions are there, then you can leave the meeting, and you can take rest. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, Rahul. Good night, Rahul.